Oh, Good morning, everyone. Good morning, dear students. Students, am I audible? Kindly let me know in the chat box. Yes, am I audible? Good morning, dear students. Yes, Samrit, am I audible? Okay. I will tell you. Good So morning. we are very good morning. So we are very quickly going to start the class. Welcome. This is how I welcome all of you to the DHSC sponsored online academic support program. And in this program, we are going to study about the chapter molecular basis of inheritance. Right? You can see in the screen the name of the chapter is molecular basis of inheritance. And done. Okay. So today we are going to deal at the last part of this class. You know this chapter has a very important weightage in your upcoming NEET entrance examination as well as in your board exam, right? So dear students, this chapter molecular basis of inheritance has a lot more impact in your board ASC examination, annual examination as well as in the entrance examination. So ଆମେ ଏଇ chapter ର ବହୁତ ସାରା part already ପଢି ସାରିଛେ but ଯୋଉମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଆଗରୁ କରିନଥିଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ତମେ ଆଜି ପାଇବନି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିବନି ବିକଜ ଆଜି ଯୋଉ ପାର୍ଟଟି ମୁଁ ପଢେଇବି that is human genome project and DNA fingerprinting that I'll start from very basic. Yes or no? So that's how it will be easy for both of us, me as a teacher and you as an audience. ଆମକୁ ଏଇଟା ଇଜି ହବ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ମୁଁ very basic ରୁ start କରିବି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରୁ ଯିବି and ଆମେ ସେଟାକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ଜାଣି ପାରିବା. Done? Okay. The topic name hochi chapter na hochi molecular basis of inheritance, and in this molecular basis of inheritance we are basically going to start from the human genome project. Yes or no? Topic na hochi nijo khata bahar karo, copy and pen bahar kari ki bas easy ho tam bhai man rakhiya pai ki topic name hochi human genome project. Yes or no? First of all ei tinta term jo mu कहली human genome project, in those three terms गोटे word तुम मानु टिके असुविधा होते बुझिया ପାଇଁ कि and that word is genome. So first of all, my first basic question starts from what do you mean by genome? What is genome? If someone will ask you what is genome, so our answer कौन होगा इठी? So genome पचले में answer कौन दबा? What do you mean by genome? Just okay. So genome कौन रहला पिला मने? Genome is set of all genes. What is genome? Genome is set of all genes. I hope color combination तमु देखा जाउथो visible थिबो, otherwise we can go and change this color also. So what is genome? Now genome is set of all genes got a haploid content. Got a human being, we have genes, you know, in principles of inheritance I have already told you about the term gene. What do you mean by gene? The gene is the unit of inheritance. Yes or no? The process of transfer of character from one generation to next generation is called as inheritance. Our inheritance is जो part के हमारे unit थिला, the basic unit of inheritance is called as gene. But in terms of molecular biology, if I am going to answer this question, what is gene?
then I can say gene is the basic structural as well as functional fundamental unit of gene is the basic structural or functional unit of DNA, functional segment of DNA. जो DNA हम पाखे अच्छी DNA you all know deoxyribonucleic acid. That DNA is a genetic molecule. It is a prime genetic molecule. It contains all the hereditary information within the chromosome. We know it is a DNA. से DNA भितर जो functional segment अच्छी जिसे DNA भितर रही कि हमारा chromosome जैसे vehicle of heredity अच्छी जहाँ माध्यमरे ଆମର information गुड़ाक inherit होची from parent generation to offspring, from parent to progeny, that is called as gene. और से gene मानव समाहार the set of all genes that is called as genome. ठीक अछि तो हम ह्यूमन बॉडी रे जो जो जीन सब अछि then that is called as genome. बुझ पाइलो genome को समझ जानि पाइलो what do you mean by genome? Genome is set of all genes. The Human Genome Project, we are going to deal in the very details about the what is genome, what is human genome, और काहे की project बोली कहा जाए चे ना ये वाला project already mega project start हुआ in the year 1990 in the USA. Clear? तो हमें को one by one देखिबा part रखो. Just a second. This part is not working probably. Yeah, I know white colored Korea panki, but there are some technical glitch. I don't know. It's not working over here. Now it's okay. Now it's fine. Okay. See, the Human Genome Project रे हमें कहाँ विषय पढ़िया को जाऊँगी. We are going to study the entire genome. See, you can see in the PPT, it is written that the entire DNA in the haploid set of chromosomes of an organism is called a genome. Yes, let's learn quickly about the line. The entire DNA, you know DNA. DNA is the what? Genetic material. Okay. Haploid set means कौन सी गला haploid को हमें n रे denote करते हो. Haploid means suppose you are a human being and you are having 46 number of chromosomes and that 46 number of chromosomes is present in two cells. Kindly mute yourself. Otherwise I have to mute you. Now you can see over here that is it visible right now? Okay, listen here. The entire DNA in the haploid set of chromosome of an organism is called as a genome. You know chromosome. Chromosome is the vehicle of heredity, and you know DNA. DNA is the basic structural. DNA is the deoxyribonucleic acid. It is the genetic material of our body. Our age of DNA, the haploid set of chromosome, we called as genome. Now, in human genome, the DNA is packed in 23 chromosomes. This one we are having 23 chromosomes, 23 pair of chromosomes. Next, human genome contains about 3.2 10 to the power 9 number of base pair. You know the length of DNA. It is already being told to you. The length of DNA is 2.2 meter. Our length हम केमती calculate करथिले हमें length calculate करथिले the number of base pair present in a diploid mammalian cell multiplied with the distance between two consecutive base pair. If you remember dear students हम एटी कौन करथिले ना जो हम length देखिथिले length काढिया ପାଇଁ हमें कौन थिला हम पाखरे the number of base pairs present in the DNA and हम NCERT बही रे लिखा है already in case of bacteria E. coli कितने बेस पेयर DNA अच्छी in case of human being कितने बेस पेयर DNA अच्छी in case of bacteriophage or virus
केते बेस पेयर डीएनए अछि केते बेसिस रे डीएनए अछि लैम्बडा फेज रे केते अछि तो सेट हम कैलकुलेट कर देखले कि यदि हैप्लॉइड सेट होची 3.3 into 10 to the power 9 then diploid रही गला 6.6 into 10 to the power 9 number of base pairs. So in a human DNA the number of base pairs are 6.6 into 10 to the power 9 number of base pairs. And in that 6.6 into 10 to the 9 number of base pair, the distance between two consecutive base pair is only 0.34 nanometer. So if you multiply both the things, like we are having, yes, any doubt? Kindly unmute yourself. If you are having a doubt, then go to the chat box and ask there only. Now, so yes, we are talking about DNA. In DNA, we know the length of DNA is 2.2 meter. And how it is 2.2 meter? Because we have multiplied the total number of base pair present in a diploid mammalian cell, and we have also multiplied with the number distance between two consecutive base pair. The set of my point human genome contains about 3 into, actually it is 3.3 into 10 to the power 9, but somehow for easy calculation, we have written that 3 into 10 to the power 9 number of base pairs are there. बहुत बेसिक रू कहूचे स्टार्टिंग रू कहूचे यू कैन सी दिस इज अ सेल सेल भितरे न्यूक्लियस अछि सेल यूकैरियोटिक सेल वी आर एनिमल सेल mammalian cell inside a cell there is a nucleus inside the nucleus there are nucleoplasm nucleus भितरे के आसीबो nucleoplasm जेम सेल भितरे cytoplasm nucleus भितरे nucleoplasm inside the nucleoplasm what is there inside the nucleoplasm the chromosomes are there. The chromosomes, which is the vehicle of heredity, we can only see that chromosome during the metaphase or anaphase of cell cycle. Only in that time they are visible, otherwise it is not visible in the rest of the times. So during the cell cycle, during the metaphase, we can see the chromosome. Inside the chromosome, chromatids are there. Yes or no? Chromosome भितरे की थांदी chromatids माने थांदी. Inside the chromatids, we'll find chromatins are there. Chromatid, then chromatins are there. Inside the chromatin, what is there? Inside the chromatin, there are nucleosome. Yes, you have heard right. It is nucleosome. And what is nucleosome? What is nucleosome? Nucleosome is basically when 200 base pair of DNA is wrapped around. So basically talking about nucleosome, in that nucleosome, what is basically nucleosome? When the 200 base pair of DNA is wrapped around a histone octamer to produce a coiled octamer form that is called as nucleosome. ठीक है say जो nucleosome अच्छी inside that nucleosome DNA is there. So if you need to find out the DNA, if you want to isolate the DNA, extract the DNA from the cell, first you need to go to the cell. Inside the cell, there is what? Inside the cell, there is present nucleus. Inside the nucleus, nucleoplasm is there. Inside the nucleoplasm, chromosome will be there. Inside the chromosome, there is your chromatids. Inside chromatids, there are chromatins. Inside chromatin is again of two types, euchromatin and heterochromatin. First, we will go to the heterochromatin. Then tightly packed then euchromatin loosely packed and inside the euchromatin you will find the nucleosomes present in beads on string pattern. Also the nucleosome अछि ता भितरे DNA गुडाई अछि और DNA भितरे जो functional segment अछि that is called as gene. So to find the gene you can see this diagram. It is the cell, it is the nucleus, it is the chromosome. Our set of all gene is called as genome. Our chromosome को हम जब काढ़ी काढ़ी कैसे देखिवा finally we find the DNA and this DNA भितर को मान अच्छे nucleotides माने present करछन because DNA is the polynucleotide chain. DNA कौन थे कि polynucleotide chain and से माने केमिति bind हेकिले by the help of hydrogen bond रे से माने nitrogenous bases project inside and they bond with the hydrogen bond binded with the hydrogen bond. Now the Human Genome Project. First, let us know why it is important. First, why are you studying this Human Genome Project? Our importance कौन है सिला? देखो Human Genome Project जो होची
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आइडिया सब प्रथम आसला कोठी अमेरिका रे ठीक अछि यूएसए रे आसला अब यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएसडीए वन मार्क क्वेश्चन रेडी की थाओ यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड तास इट आसला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एनआईएच they two together started the project in the 1990 then 1990 the USDA United States of Department of Energy along with National Institute of Health both together started the project Human Genome Project. Then the thought is like let us sequence the whole genome of a human being. Because we know it is gene gene our सब जगह properties control करछि. Like in Mendelian genetics, you have known that genotype controls phenotype. Yes or no? ଯେମିତିଆ ଜିନ୍ ଅଛି ଭିତରେ ଯେମିତିଆ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଆଲିଏଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଫିନୋଟାଇପ ଟି ହବ if the genes are capital T genotype is capital T then the phenotype should be tall if the genotype is small t again the phenotype will be dwarf the plant will be dwarf the genotype controls phenotype yes or no so we know ଆମକୁ ଯୋଉ ସବୁ डिजीज सब होची से डिजीज माने को टैकल करिया पाई कि डिजीज में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज अछि सम आर कंजेनिटल डिजीज those diseases are started हम जन्म हवा समय रे हम पाखे जो डिजीज माने अछंदी किछि डिजीज एनवायरमेंटल इश्यूज रो आस्ते किछि म्यूटेशन ही काम बॉडी रही है किछि जेनेटिक डिसऑर्डर थांदी किछि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर सब थांदी हम सब जिंस ह्यूमन जेनेटिक्स पार्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑलरेडी पढिछो तो टर्नर सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यस और नो तो ए सब जिंस को हम टैकल करबा पाई कि हमको ह्यूमन जीनोम को जानिबार थिला as a human genome को जानिया पाई कि लॉन्च हेतला गोटे मेगा प्रोजेक्ट and the name of the mega project is human genome project or HGP जोटा कि स्टार्ट है again I am repeating the same thing it was started in the year 1990 कोठी एक लोकेशन कोठी ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रे को जगह एग्जैक्टली हितला ना USDA United States Department of Energy and along with NIH National Institute of Health ये जोड़ा समय मन रखिबो आ परे ए प्रोजेक्ट को आगो नबा पाई कि जेतु एटा मेगा प्रोजेक्ट थिला आदरे बहुत पैसा खर्च होबार थिला बहुत नॉलेज आ पई दरकार एंड इट्स अ वास्ट प्रोसेस इट्स अ वेरी टीडियस जॉब जो एते कष्ट काम करिया पई कि आंकर सपोर्ट रे को माने आसिले आंकर सपोर्ट इले माने काइंडली म्यूट योरसेल्फ अरे त्यो करिया ପାଇଁ टाइम टेन लागि माने एठी yes आगो करिया पई टाइम लागितला इट्स started in 1990 and ended in 2003 मानबिया डाला मोर नो इट्स लाइक यू डोंट ना लास्ट टाइम एटा ताको मिलियो 3500 मते मिलियो 1000 केते घंटा पड़ो kindly mute yourself dear participants I'm sincerely requesting all of you kindly mute yourself those who are talking now the human genome contains about 399 human genome project started in 1990 and ended in 2003 you just remember one thing that a project was start हेता USA रे and आपको हेल्प करिया पाई कि सबुठ प्रथम आस्तले को माने ना हमर वेलकम ट्रस्ट ठीक है वेलकम ट्रस्ट कोठी यूनाइटेड किंगडम फर्स्ट वन लिखिला फर्स्ट वन इज USDE यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी तांको सहित मिसले के NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ then idita hothile USA ro then tapare asila ke UK United Kingdom ro welcome trust and then asila France Japan Germany and finally China तो China हे गला Germany हे गला France हे गला Japan हे गला different region ना different corner of the globe रो scientist माने एकाठी हेले and project को continue करिथिले The Human Genome Project started in 1990 and in 2003, 13 years of project. That's why it is called as the first mega project for the sequencing of nucleotides and mapping of all the genes in human genome. I mean, concretely, the human you can see here the human is having different kind of genes as a set of all genes, a haploid set of chromosomes को हमें genome बोली कहूचे. So basically जो 23 टा chromosome थिला 23 भितरे 22 थिले ऑटोजोम और लास्ट पेयर थिला एलोजोम्स दिस नो एलोजोम्स कहले सेक्स क्रोमोसोम को बुझौची जो सेक्स क्रोमोसोम टी इन केस ऑफ फीमेल इज XX and in case of male it is X and Y so all total 22
प्लस एक्स प्लस वाई ये 24 क्रोमोसोम को आमे सीक्वेंसिंग करथिले सीक्वेंसिंग का मीनिंग होची कोन टू नो द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू नो द नेम ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू नो द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कहा पर की अछि एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन थाइमिन गुआनिन एडेनिन साइटोसिन केमते सीक्वेंस प्रेजेंट अछंती ताकू जानिबा पई की सीक्वेंसिंग प्रोसेस स्टार्ट कराइथिला then the HGP was coordinated by US Department of Energy and the National Institute of Health ठीक अछि बारंबार ए जिनसटे मु माने कहि सारलेनी आई होप तमन्ना को मन रखि सारथिबो ए प्रोसेस टी स्टार्ट हेतिला को जगह रे मेगा प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी along with National Institute of Health and then को हेल्प रे आस्तले के वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके यूनाइटेड किंगडम and then यूनाइटेड किंगडम पर चाइना जापान जर्मनी फ्रांस ये चारटा कंट्री भी संगरे आस्थिले देन आई होप ए पीपीटी जहां जो सेंसर अछि त मन तो क्लियरली देखिचो क्लियरली बुझि परथिबो इफ यू हैव एनी टाइनी डाउट छोटिया डाउट भी हेले यू कैन गो इन द चैट बॉक्स एंड आस्क मी देयर आई एम रेडी टू आंसर योर mysteries now if we kindly move to the next segment you can see what are the goals of human genome project see किछि भी मेगा प्रोजेक्ट करबा पूर्वरु बा किछि भी प्रोजेक्ट करबा पूर्वरु साइंटिस्ट माने किछि गोल फिक्स करथाय बिकॉज गोटे प्रोजेक्ट करबा पई कि मैन पावर खर्च होची एठी एनर्जी रा खर्च होची एठी पैसा रा खर्च होची ठीक है रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी और मनी कोठो आसी ना टैक्स पेयर माने कोठो आसुची दोज टैक्स पेइंग सिटीजन्स प्रेजेंट अछन सेमानक पैसा रो हार्ड एंड मनी रो टैक्स नेकी गवर्नमेंट ये रिसर्च एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट R&D रे इन्वेस्ट करछन then so scientist माने को भी किसी ना किसी क्वेश्चन आंसर दबा जाछि they want to find a solution for a particular problem और से प्रॉब्लम नो सॉल्यूशन काढिया पाएंगे फर्स्ट दे हैव टू सेट देयर गोल्स जस्ट लाइक तुमने भी तुम गोल सेट कर चुके आफ्टर दिस +2 आई विल बी गोइंग एंड appearing for the NEET entrance examination in the NEET entrance examination there these are the syllabuses these are the topics from which question are going to be asked these are the type of questions तुम गोल सेट करछो कि मते एतिकी जुलाई मास भीतर एतिकी मोर पोर्शन कवर करिवार अछि बाय अगस्त आई नीड टू कवर ऑल दिस थिंग्स बाय दिस डिसेंबर मो बोर्ड प्रिपरेशन कर देथिबी जहां भी रिवीजन केबड स्टार्ट करबी यू आर हैविंग सर्टेन गोल्स इन योर लाइफ ठीक सेम दी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रो कोन मेजर गोल्स थिला द नंबर 1 गोल इज आइडेंटिफाई ऑल द एस्टिमेटेड जीन्स इन ह्यूमन डीएनए तो ह्यूमन डीएनए रे जहां पे सब जगह जीन्स अछंती जीन्स यू नो जीन इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस से जीन को हमें कोन करे फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करबा आइडेंटिटी हम क्लासिफिकेशन ने फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग देन ताको हमें नोमेनक्लेचर का ना दोथिले देन द प्रॉपर प्लेसमेंट करथिले एग्जैक्टली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रे फर्स्ट हम काम होला कि जीन को आइडेंटिफाई करबा से जीन के को जगह अछि Number 2, sequencing of the 3 billion chemical base pairs of the human DNA. So, the human DNA haploid set के 3.3 into 10 to the power 9 number of bases are there. So, जो 3.3 into 10 to the 9 number जो bases अच्छी, so bases रे क्या अच्छी nitrogenous base. And if you remember, inside the nitrogenous base, two types of nitrogenous bases are there. One is the purine and second is the pyrimidine. Inside the purine, the 9-membered ring, there are adenine and guanine, and inside the pyrimidine, there are cytosine and thymine for DNA, and cytosine and uracil for adenine. Clear? So, ये जो adenine है गला, guanine है गला, cytosine है गला, thymine है गला, तांकर sequencing करियर अच्छी, like they are present in which manner? A, T, C, G, एमती अच्छी, G, C, T, A, एमती अच्छी, T, A, C, G, एमती अच्छी, को एंगल अछन केमिति प्रेजेंट अछन एते रिपीट हे जन से माने ए सब जिंस को हमें सीक्वेंसिंग बोली कहूचे द फर्स्ट गोल द मेजर थिंग इज टू आइडेंटिफाई ऑल द एस्टिमेटेड जीन जति एस्टिमेट करा हेतिला से सब को हम आइडेंटिफाई करबा अछि सेकंड सीक्वेंसिंग ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स ऑफ द ह्यूमन डीएनए थर्ड वी नीड टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन डेटाबेस इले माने खाली आइडेंटिफाई कर देले हबनी बस सीक्वेंस देखि देले हबनी we need to keep that information with us. We need to store this information in the database for the further reference, future रे आकु नै किछि इनोवेशन जिंस करी हबो आकु नै किछि हमें नुवा जिंस बनाई परिबा for that we need that information जेमति कि तमे गोटे जिंसटी पढिला बेलकू से इन्फॉर्मेशन खाली ब्रेन में रखुन तमे कोठी नोट करके रखि दउछ कि आगो गले इन्फॉर्मेशन दी काम रे आसीबा
Then ठीक से टाइप रो आंकर थिला कि स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेसेस तो डाटाबेस बने कि से इंफॉर्मेशन मानो को हमको स्टोर करिवार सिरा द फोर्थ गोल वाज इंप्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस अच्छा हम स्टोर तो कर देले बट इफ यू हैव नो आइडिया हाउ टू एनालिसिस द डाटा देन द डाटा इज ऑफ नो यूज जदि मो पास गोटे एमती जिंसटी अछि जाक मो खाली रीड करि पारुछि ता मीनिंग बुझी पारुनी से रही किछि लाभ भी नहीं तो सेठी कि मत कौन करिया पड़िबो किछि टूल्स बनिया पड़िबो टूल्स कहले एमती किछि मशीनरी डेवलप करिया पड़िबो बाय द हेल्प ऑफ दोस मशीनरीज आई कैन गो एंड एनालाइज द एंटायर डाटा क्लियर तो मैंने एठु जानि परथिबो कि जेमती गोटे प्रोजेक्ट टी करा जाउछि फॉर एग्जांपल सपोज तुम स्कूल रे तुमर हायर सेकेंडरी स्कूल रे यू आर अरेंजिंग सरस्वती पूजा गणेश पूजा और टीचर्स डे सेलिब्रेट करछो से टीचर्स डे सेलिब्रेट करिया पई कि तमर गोटे ग्रुप ऑफ कमिटी मेंबर बसिलो कि तुम सब वॉलंटियर माने एकाठी हेलो एंड तुमे तमर जो डिवीजन ऑफ लेबर करबा स्टार्ट करलो काम को तुमे डिवाइड कर देलो कि एती पिला तुमे जीवो डेकोरेशन आइटम्स रे एती पिला तुमे जीवो जो सजासजी करला परे जो जिन सब मार्केटिंग रे जीवो एती पिला जीवे ग्रीटिंग्स कार्ड बनेबारे बा किछि लेखा लेखि इनविटेशन कार्ड बनेबारे एती पिला को रंगोली दायित्व दिया जायछि किछि पिला को डिसिप्लिन दायित्व दिया जायछि किछि पिला खाଇବା पे दायित्व निचंदी जेम तमे तमरो काम को तम लेबर को डिवीजन कर दउछ की को पार्ट कंट्रोल करिवो ठीक सेमती हम जे गोल्स डिसाइड कराउतला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रो किछि साइंटिस्ट माने को दिया जायला दायित्व कि यू विल गो एंड आइडेंटिफाई द ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन जीनोम सेकेंड लोगों काम थिला कि आइडेंटिफिकेशन हे गेला तार सीक्वेंसिंग करा हबो कि एस्टिमेटेड जीन्स मानको सीक्वेंसिंग करा हबो डाटाबेस देखा हबो आउ खाली काम थिला डाटाबेस को स्टोर करिवा अछि ताको केमिति स्टोर करिवो दैट इज योर हेडेक देन केमिति स्टोर करा हबो केते इजीली स्टोर करि हबो दैट इज योर हेडेक then one store he gala then there are set of scientists जो मन काम होला कि से डाटा को एनालिसिस करिबा जानिबा कि को जिंसटी कहा पाई कि प्रोटीन बनौची को जेनेटिक कोड को प्रोटीन फॉर्मेशन करची आ सेट म्यूटेशन हे गेले कोन चेंजेस आसुची इफ यू रिमेंबर सिकल सेल एनीमिया ओटा सिंगल पॉइंट रे म्यूटेशन हे दिला आ से सिंगल म्यूटेशन सकासे आरबीसी जे कि गोटे सर्कुलर शेप रे थिला ओवल शेप रे थिला से आरबीसी टा को कंडीशन हेगा सिकल कंडीशन हेगा सिकल सेल टाइप रे हेगा आफ्टर दैट सकासे एनीमिया कंडीशन देखाय कि इवेंचुअली डेथ ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म a single mutation is going to completely kill that organism तो एई सब जिंस फ्यूचर रे न हो तो सेति पई कि हमें जानिया पई कि हमें गोटे गोल सेट करले कि वी नीड टू नो द कंप्लीट ह्यूमन जीनोम आ कहार सीक्वेंस रो कोन रोल रही सेटा भी जानिबा हमर थिला नेक्स्ट हमें कोन काम थिला ट्रांसफर दिस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर लाइक इंडस्ट्री हमें जदि किछि गोटे हाइब्रिड टे बनौचे गोटे हाइब्रिड प्लांट टी बनौचे बा किछि मेडिसिन्स बनेयार अछि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हे गला बा जोठी हमर जीन थेरेपी प्रोसेस होउचे से इंडस्ट्री डाटा दरकार अछि तो हमें डाटा को आने कोन करि परिबा ताको हमें ट्रांसफर कर परिबा डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर को ठीक अछि बायोटेक सेक्टर को दे परिबा फार्मास्यूटिकल सेक्टर को हमें दे परिबा बा हमें ताको यूज करि कि गोटे एनवायरमेंटल सेक्टर रे किछु चेंजेस आनि परिबा कि सपोज गोटे एमती माइक्रोप्लास्टिक बहुत हे गेले हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होचंदी तो हमको एमिति किछि फंगस बनेबार अछि कि एमिति किछि बैक्टीरिया बनेबार अछि कि एमिति किछि माइक्रोब्स बनेबार अछि जे से हमर प्लास्टिक पॉल्यूशन को सॉल्व कर परिबो तो एमिति किछि जेनेटिक सीक्वेंस हम चेंज करिबा सो दैट से प्लास्टिक टा से माने डाइजेस्ट कर देबे डिग्रेड कर देबे हम काम भी हिजिबो से माने ग्लो भी कले आ एथि पई कि हम दरकार इंफॉर्मेशन तो से इंफॉर्मेशन को हम एमिति काम करि परिबा इंडस्ट्री ट्रांसफर करि परिबा एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज एड्रेस द एथिकल लीगल and social issue ELSI ethical legal social issues को हमें कौन करिबा ताको एड्रेस करिबा दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट आछे द्वारा जदी किछि ट्रेडिशन ताकर किछि कल्चर अछि ताकर किछि मानना अछि कि हमें ए कामटी करू ताकर एमति किछि रिचुअल्स अछि तो ए जो एथिकल हे गला लीगल हे गला सोशल इश्यूज हे गला ए सब भी फाइंड आउट हम करि परिबे देखि के ए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट द्वारा तो बेसिकली तमे एजाई गोटे ब्रीफ आइडिया आसी जीवनी कि व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किए से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करथिले केबे स्टार्ट हेतिला केबे एंड हेतिला ऑफिशियली लेकिन अनऑफिशियल डाटा वाला अलग अछि आई टेल यू लेटर कि ऑफिशियली 1990 रे स्टार्ट हैला 2003 रे एंड हैला आ से काम हैला बेले कोन सब चेंजेस आसीतिला कोन तकर गोल्स थिला यू हैव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट दिस टिल नाउ यस और नो टिल नाउ किसी डाउट अछि यू कैन गो एंड आस्क मी इन द चैट बॉक्स then we'll quickly move to the next segment. Any doubt till now?
Any doubt? Or shall we move? Okay. Going to the next segment, you can see over here that Human Genome Project methodologies. First, we complete kale kaha bishay re the goals. ଆମେ ଗୋଲ ବନେଇଦେଲେ ଆମେ ପ୍ଲାନ ବନେଇଦେଲେ କି ଏଇ ପ୍ଲାନ ରେ କାମ କରିବାର ଅଛି ଦେନ୍ ଆମକୁ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ମେଥଡୋଲୋଜିସ୍ କୋ ମେଥଡୋଲୋଜି ରେ କିଏ କାମ କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ କ୍ଲିୟର ଓକେ ଗୁଡ୍ सी so you can see over here it is a set of genome এই जो genome ଅଛି ଏଠି କିଛି green part ଅଛି ଆଉ କିଛି gray color part ଅଛି again କିଛି green part ଅଛି କିଛି blue color part ଅଛି so let me tell you inside a human DNA inside a human gene there are two kind of codons one is the coding sequence one is the non coding sequence एमती गोटे सीक्वेंस अछि जे आगो जाई कि जेनेटिक कोड फॉर्मेशन करिवो जो जेनेटिक कोड टी गोटे इंफॉर्मेशन को पोजेस करछि आ से इंफॉर्मेशन नो आगो जाई प्रोटीन रे फॉर्मेशन हबो आउ एमती भी के सेगमेंट अछन हम डीएनए भितरे जो माने बेसिकली दे आर वर्किंग फॉर काइंडली म्यूट योरसेल्फ ओके सो नाउ କିଛି ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କୋଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା କୋଡିଂ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କୌଣସି ପାଇଁ କି କୋଡ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ନନ୍ କୋଡିଂ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ବେସିକାଲି ସେ କୋଡିଂ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କୁ ଆମେ ଏକ୍ସନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ଆଉ ନନ୍ କୋଡିଂ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଇ ହୋପ ତମେ ଅଲରେଡି ପଢି ସାରିଥିବ ଇନ ଦ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାसेस ଯଦି ବି ଜାଣିନ ତାହେଲେ ଜାଣିକି ରଖ କି ଏକ୍ସନ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ରନ୍ ର ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି କଣ ଏକ୍ସନ୍ ହ୍ୟାଜ ଦ କୋଡିଂ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଇଣ୍ଟ୍ରନ୍ ହ୍ୟାଜ ଦ ନନ୍ କୋଡିଂ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କ୍ଲିयर ନାउ तो हमर मेन मोटो एठी कोन अछि ना मेथोडोलॉजी रे हम केमति काम करछि ना दीटा पार्ट रे हम काम करछि वी कैन गो फॉर द EST दैट स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग और यू कैन गो फॉर सीक्वेंस एनोटेशन क्लियर ले माने देखा जे देखिबा को जिंसटी सहज देखा जाउछि बट टेक्निकली आ भीतर बहुत सारा डिटेल्स अछि देन आ तुम जदि क्लियरली सुनिबो आराम से सुनिबो तुम जानि पालो डिफरेंस कोन आ भीतर अछि स्टार्टिंग फ्रॉम द EST स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग. So basically, you know, human genome is very long. You should know the length of DNA was 2.2 meter. And for your kind information, my height is only 1.72 meter. If a complete organism is 1.72 meter, more body ro gote cell jota ki khali akhi ki visible honi, I can't see my cell in my naked eye. Say cell vitere there is a nucleus which is even smaller than my cell. Say nucleus vitere chromosome achi. क्रोमोजोम भितर क्रोमैटिड अछि क्रोमैटिड भितर क्रोमैटिन अछि आ से क्रोमैटिन भितर जाई कि डीएनए प्रेजेंट अछि न्यूक्लियोसोम रे गुडे हिस्टोन ऑफ केम चली पटे तो 2.2 मीटर लेंथ रे डीएनए टी पैकिंग हे कि मो बॉडी भितर प्रेजेंट अछि आ सेठी जो सीक्वेंस अछि से सीक्वेंस आगो जाई कि कंट्रोल करछि व्हाट विल बी माय अपीयरेंस मोर स्किन कलर केमति हबो मो आई कलर केमति हबो मो हेयर टेक्सचर केमति हबो ठीक अछि ए सब जिन से जीन ही कंट्रोल करछि तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम काम हैला कि जेतिको जीन अछि हम बॉडी रे समस्त फर्स्ट एक्सप्रेस कर देबा व्हाट डू मीन बाय एक्सप्रेशन ओडे जीन पे एक्सप्रेस ले कोन बनेबो आरएनए बनेबो यस और नो you have listened about you have learned about the central dogma and in the central dogma ଆମେ कोन पढिथिले ये central dogma is the unidirectional flow of genetic information. Central dogma is a unidirectional flow of genetic information from DNA to protein. Dear students, it's my sincere request. Next onwards, I'm going to remove you from the class if you do any kind of such things. Okay. In central dogma, central dogma it is a unidirectional flow of genetic information from DNA to protein via mRNA. This is the part. ठीक अछि सेंट्रल डॉगमा होछि कोन ना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डी पास आउट करछि कोठ को जाय के डीएनए रो प्रोटीन भाया देखि जाउछि एमआरएनए तो अब फर्स्ट कोन कहले जो डीएनए हम पाखे अछि त जीन अछि ताको हम एक्सप्रेस करै तले और जब जीन टी एक्सप्रेस हुए से कोन बनेबो आरएनए बनेबो अच्छा ये प्रोसेस रो ना कोन थिला ट्रांसक्रिप्शन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस अछि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट इट इज सिंपल
But in case of eukaryotes, eukaryote जो transcription टी होची तारे टी changes अछि जेमति कि in eukaryotes directly mRNA formation हुएनी before the formation of mRNA basically ହେଇଥାଏ कौन mRNA बनिला पूर्वରୁ कौन ହେଇଥିବ बारंबार कहला सत्वे भी एभला जिंस होउची you won't imagine these are see okay let's focus on what is like our transcription. What is transcription? The process of formation of RNA from DNA. But in case of eukaryotes, the mRNA directly form हुएନି mRNA बनिला समयରୁ ता पूର୍ବରୁ बनिथिବ HN RNA that is called as heterogeneous nuclear RNA HN RNA. Then ये जो HN RNA बनिथि then तापर start हबो post transcriptional modification. एमिति बुझ कथाटा we are having DNA we want to make RNA. DNA रे जो RNA फॉर्मेशन हेची DNA रो RNA बनिया पई कि RNA डिफरेंट टाइप रो थिला RNA कोन थिला mRNA rRNA tRNA राइबोसोमल RNA ट्रांसफर RNA एपटे हे गेला हमर मैसेंजर RNA और डिफरेंट RNA बनिया पई कि we are having different types of RNA polymerase RNA polymerase 1 RNA polymerase type 2 RNA polymerase type 3 different type of RNA polymerases are there. Basically my point of saying is that ଯେତେବେଳେ ଆମେ DNA ର RNA formation କରୁଛେ process like transcription ତ directly mRNA बनेनी before mRNA बनेଥାଏ HNRNA that is called as heterogeneous nuclear RNA. HNRNA will go for post transcriptional modification that changes ଆସିବ and in that post transcriptional modification all those introns will be selected and they will be removed. हम जब सिलेक्ट कर ले और तो रिमूव कर देले एग्जांपल दे बुझो जे सपोज इन एन ओकेजन you take your phone and you click some different angle selfie उठा स्टार्ट करला now the thing is सब जगह सेल्फी को तुम अपलोड करिवो सोशल मीडिया रे नै ना ताहा जे बेस्ट थिबो सबटु भलो थिबो बा जो एंगल फोटो भलो आस्थिबो और तुमको जो फोटो सबटु भलो लागिथिबो तब सेही पार्ट से फोटो तुम अपलोड करिवो बाकी जो फोटो सब उठी अछि तुम फोन ने तो तुम फोन ने रहि कि तुम मेमोरी खाउछि the storage will come out, phone efficiency come out. So basically you will select those redundant photos which are not required for you and then you will select and delete it. You will remove it. Just like the same way DNA पाखरे जहाँ जहाँ थिला कॉपी है कि जो RNA फॉर्मेशन है जी सब जगह मैसेंजर RNA हवनी ये एंटायर मैसेंजर RNA बनने पूर्व जो HNRNA बने जी से HNRNA को हमें कौन करिबा ना स्प्लाइसिंग करिबा and splicing रे कौन कहले will carefully select the introns and will remove it. Then so that कौन है ना जब DNA रो RNA फॉर्मेशन हबो तो बेसिकली हमर जतिक सब इंट्रॉन्स माने थिले नॉन कोडिंग सीक्वेंस थिले तांको हमें हटाई दिछि तो हमहु कौन करियार अछि ह्यूमन जीनोम को देखियार अछि तो ह्यूमन जीनोम पे हमें कौन करले बेसिकली नाउ वी फोकस्ड ऑन द आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स that are expressed as RNA हमें फर्स्ट ने ले गोटे DNA को करले एक्सप्रेशन माने हमें करले ताऊ ट्रांसलेशन कला पर से बने देला RNA को पुणे में रिवर्स प्रोसेस रे जाई कि cDNA बा कॉम्प्लीमेंटरी DNA फॉर्मेशन कर देले नाउ एबे जो कॉम्प्लीमेंटरी DNA हम पाखर अछि दैट इज मोर प्रोसेस्ड फॉर्म आ ये हमर सीक्वेंस जो छोटा ही गला हमें एठे आराम से तार टैग सब लगे दा कि कार फंक्शन कोन ए सीक्वेंस का काम होला दिस ए सीक्वेंस का काम होला दिस ए सीक्वेंस का काम होला दिस हमें तक बे डिफरेंट टैग देगी बने देले दैट इज कॉल्ड एज EHT मेथोडोलॉजी नेक्स्ट असला हमर सीक्वेंस एनोटेशन व्हाट डू मीन सीक्वेंस एनोटेशन ये कहला कि इट्स अ ब्लाइंड अप्रोच ना माने सीक्वेंस एनोटेशन इज अ काइंड ऑफ ब्लाइंड अप्रोच EST कोन कहै छै ना EST कहला कि भाई जहां अछि ताको समस्त को ट्रांसक्रिप्शन करला पर तमे आरएनए बनाओ वंस आरएनए बनि गेला फोन रिवर्स प्रोसेस से जाइकी सेटु हमें कॉम्प्लीमेंटरी प्रोसेस से जाइकी cDNA बा कॉम्प्लीमेंटरी DNA फॉर्मेशन कर देबा देन which will make more sense to this process. But in sequence annotation, we are simply blindly going and transcribing all those things. जहाँ जहाँ तला DNA पाठे समस्त हमें annotation करिया start करें, sequencing करिया start करें. Sequencing whole set of genome containing all the coding as well as the non-coding sequence and later assigning different region in the sequence with function.
डन तो yeast रे कोन कहले ना देखि पाछ तुम yeast से ये तुम जीनोमिक डीएनए तो मन कहले cDNA who is talking basically next time हम किसी भी एमती हरकत देखिबे I'll take strict action you won't believe see in genomic DNA ଆମେ କଣ କଲେ ଏଠି cDNA ବନେଇଲେ cDNA is called as complementary DNA and in complementary DNA ରେ ଆମେ express sequence tag accordingly ସବୁ ଯା sequence ମାନଙ୍କୁ tag ଲଗେଇଦେଲେ କାହାର କାମ କଣ କିଏ କୋଉ direction ଅଛି ଏଇ ଥିଲା ଆମର basic କାମ ଗୋଟେ large part ରୁ small part ରେ ପାଇଗଲେ but it is sequence annotation ne we are doing nothing like this ଆମେ entire genome को whole genome को sequencing कले and then ତାଙ୍କର जो जो काम ଅଛି कि exon हबो कि intron हबो कार को segment ର काम ଅଛି ଆମେ ସେ accordingly ତାକୁ କଣ କରୁଛେ ନା ଆମେ tag ଲଗେଇବା start କରୁଛେ next तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करिया पई प्रोसीजर कोन फर्स्ट ऑफ ऑल आमे देखिले तारो व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तार इंट्रोडक्शन देखिले सेकंड आमे देखिले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रो गोल्स कोन थिला छटा को गोल्स आमे जानिले थर्ड आमे जानिले कि से जो मेथोडोलॉजी कोन अछि को मेथोडोलॉजी रे कामटी होची एंड लेट्स कम टू द फोर्थ स्लाइड आमे कोन कहउची कि ना ता केमेदी को प्रोसीजर रे काम करिबा फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइसोलेट डीएनए फ्रॉम ए सेल बिकॉज़ वी आर डूइंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जीनोम को काढिया पई कि हेले हमको डीएनए को आइसोलेट करिया पड़ो सेल भीतर जो ह्यूमन सेल अछि सेल जो अबिका हमर न्यूक्लियस अछि न्यूक्लियस जो क्रोमोसोम अछि से क्रोमोसोम भीतर डीएनए को हमको बाहर को काढिबार अछि फर्स्ट पॉइंट हला आइसोलेट डीएनए फ्रॉम अ सेल और आइसोलेशन पाएंगे डिफरेंट प्रोसेस अछि डिफरेंट मेथोडोलॉजी अछि इन केस ऑफ प्लांट द method is different in case of animal cell the method is different in animal ଭିତରେ भी डीएनए हमें हेयर ରୁ काढी परिबा हम ब्लड ରୁ काढी परिबा हम सलाइवा ରୁ काढी परिबा हम स्किन सेल ରୁ काढी परिबा जो सीमेन ରୁ काढी परिबा तो जो पार्ट रो डीएनए काढुचे तार भी एक्सट्रैक्शन ର मेथड अलगा रहइबो तो हमको एते खाली मन रखियार अछि हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करिवार अछि तो प्रोसीजर नंबर 1 जेम तनो प्रैक्टिकल पिला माने करूछ जेम एम्स ऑफ द experiment then requirements, then we are coming to theory, and then we come to the procedure. How you do that experiment? Exactly. So our first procedure hoji isolate DNA from a cell. Then second, we need to convert into random fragments. हमें तो कौन कहले random fragment रे convert करें. Fragment बुझ पड़छ? Fragment means small segment. टुकड़ा टुकड़ा हम तब कर देले केमिति ना ताको randomly splicing करके. एटे जो हमें डीएनए को क्लीव करिचे डीएनए को कट करिचे डीएनए को स्प्लाइस करिचे हमें एटे हेल्प नोचे restriction endonuclease enzyme just remember next we need to clone in a host हमें ये जो डीएनए को नेकी होस्ट बॉडी रे क्लोन करिबा क्लोनिंग इज अ सेपरेट थिंग हमें एटा को बायोटेक पार्ट रे पढिबा फॉर टाइम में जस्ट रिमेंबर व्हाट इज क्लोनिंग क्लोनिंग माने गोटिए जिंस रे मल्टीपल कॉपी बनेइबा जेरॉक्स बनेइबा जेन तमे फोन ने किछि एप्स अछि से ऐप रे किछि डाटा अछि एंड सडनली मो फोन खराब हो जाउची एंड आई नीड टू ट्रांसफर ऑल दोस डाटा टू माय न्यू फोन और इतने सारा डाटा को सेपटो पठिया अपेक्षा हमें से न्यू फोन ने क्लोन फोन को जाइंकी एपट फोन ने जहां जहां डॉक्यूमेंट थिला एग्जैक्टली सेम वे तक हमें क्लोन कर दो ट्रांसफर कर दो आ गोटे फोन को सेम जे हमर एटी कोन करते डीएनए पाखे जहां जहां थिला तब हमें क्लोन कर दोचे फॉर आवर सेफ्टी हम तो टाइमिंग सेव करिया पई कि हमें क्लोन करले और क्लोन करिया पई कि वी नीड अ होस्ट हमु दरकार गोटे होस्ट बॉडीटे और खाली होस्ट ले हबनी होस्ट सहित हमको दरकार गोटे वेक्टर जो वेक्टर टी डीएनए को कैरी करके नै परिबो मन रखै जिंसटी वेक्टर इज वेरी इंपोर्टेंट वेक्टर किए जे गोटे फॉरेन पार्टिकल फॉरेन डीएनए को बा डिजायर्ड डीएनए को कैरी करके नै कि होस्ट बॉडी रे क्लोनिंग करू as vector हमर एटी के ही परिबो ना होस्ट एटी बैक्टीरिया होस्ट ले तो तांकर वेक्टर के ही गला ना BAC and YAC केस वेक्टर BAC stands for bacterial artificial chromosome YAC stands for yeast artificial chromosome then BAC and YAC just remember the name BAC YAC these are the vectors bacterial artificial chromosome yeast artificial chromosome details re padiba in the next chapter that is biotechnology principles and processes the biotech part you will need to know about the plasmid the extra chromosomal circular double stranded circular DNA जी present अछि bacteria पाखरे और जर काम होची it can autonomously self replicating
निजे निजको रेप्लिकेट करि पारुछि क्रोमोसोम रो आउटसाइड रे प्रेजेंट अछि ता सहित सी कोन करछि ना बैक्टीरियल सेल रे रहिकी डिजीज को फाइंड आउट करि पारुछि बा एटे हमर ट्रांसफॉर्मेशन ने हेल्प करि पारुछि से जो प्लाज्मिड रहिला ताको हम वेक्टर रूपे यूज करछे तो BSC YSC आर द वेक्टर्स बैक and the host are bacteria and yeast and then ame ei jo cloning ame karuche kono we are basically doing amplification. What do you mean by amplification? Amplification means multiplication. ଯେତିକି DNA ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ multiply କରିକି number of segment को increase କରୁଛେ. Next, sequencing of fragments using automated DNA sequences. तो जो sequence ଆମ ପାଖରେ ଆସିଲା जो fragments ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପଠେଇଦେଲେ କୋଉଠିକି automated sequencing DNA sequencer. ଏଠି ମନେ ରଖିବ ଜଣେ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଫ୍ରେଡରିକ୍ ସାଙ୍ଗର. ତ ଫ୍ରେଡରିକ୍ ସାଙ୍ଗର ଏ ମେଥଡ ଡେଭଲପ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଫ୍ରେଡରିକ୍ ସାଙ୍ଗରଙ୍କ ମେଥଡରେ ଆମେ ପ୍ରୋସେସଟି କରୁଛେ. Dear students, you are in your intermediate class. तुम तुम्हारा 11th 12th एज रेंज रे अछ. तो 12th सेक्शन में तुमको ब्रीफली खाली जाना जाउची whenever you go for higher studies जब तुमको +3 करिवो BSc MSc or PhD in this process in this relevant field then only you get to know about the sequencing method in more details. For time being खाली जाने की रखी जाओ कि हम डीएनए सीक्वेंसिंग रे केमती करूचे को मेथड रे करूचे ना Sanger sequencing method. Who is Sanger? Sanger is Frederick Sanger, a scientist जे की मेथड डेवलप करथिले. Next, arrange the sequences based on overlapping regions and then once हम sequence टी पाई गले तब हमें overlapping regions और सेट कर दी. Then first example starting with biopsy. First we need to isolate the DNA from the cell. हमें DNA आनिले DNA आंसला पर से DNA को हमें क्लोन करिबा इन अ होस्ट बॉडी. क्लोन करछे माने हमें कोन करछे सेठी मल्टीप्लिकेशन करछे एम्प्लीफिकेशन करछे. होस्ट हमर किए ठियाला ना बैक्टीरिया एंड यीस्ट. बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक रे जीव, यीस्ट हमर यूकैरियोटिक रे जीव. बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर, यीस्ट भी यूनिसेलुलर. It is prokaryotic unicellular, it is eukaryotic unicellular. Then हमें वेक्टर यूज करछे कहा को ना बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम फॉर एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस. नेक्स्ट, once amplification हे गला now you need to sequence, we need to the segment of the DNA. So fragment of कोन sequence अछि A T G C C G T A. We need to know the sequence of fragments using automated DNA sequencer. इनकी कंप्यूटर अछि जब हमें हमर सेगमेंट को दे देले से ऑटोमेटिकली द सीक्वेंस कर देबा. आ once sequencing हे गेला परे we need to arrange the sequences based on overlapping regions. Overlapping माने कहला A G C T अछि तापर देखोनी C T G A तापर देखोनी G A C T तो माने सब ओवरलैप करके अछि. Just like this overlap करके जण को ऊपर जणे ओवरलैप करके जाउछनी. For example, you can see over here this segment is completely equal, this segment completely equal, this part is completely equal. तो माने ओवरलैप करके प्रेजेंट अछि ने पार्ट रे. Next, alignment of sequences using computer programs. And then तक हमें align करिबा, alignment तक हमें एकठी करिबा computer program दे की कोड annotation करिकी कोड में skipping करिकी कोड splicing करिकी ताको फोन सांग होइकी एकठी करिकी रखिबा. And finally हमर कोन हे जीवो ना DNA sequence के बने जीवो. Like this you can see in this slide A T G C A C T G C G A double T C C G A T G G A A G G G C A T T G G C. तो एमती गोटे सीक्वेंस फाइनली फॉर्मेशन हैला फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग. फ्रॉम वी गॉट द डीएनए भीतर हम फोन फ्रैगमेंट कले डिफरेंट पार्ट रे डिवाइड कला पर तको हम एटी कोन कले क्लोन कले. देखो तुम एटी देखि पारछो कम जिंस अछि एटी बहुत सारा जिंस अछि त माने एटी कोन हैछि मल्टीप्लिकेशन हैछि एम्प्लीफिकेशन हैछि. आफ्टर एम्प्लीफिकेशन तक हम सीक्वेंसिंग कले बाय यूजिंग सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड. देन तको हम सीक्वेंस मानको तांकर overlapping regions होते align कले and then तबे finally हमें कौन करते ना sequence से finally formation कले. So this is the entire procedure of human genome project. If you have any doubt till now, you can ask me in the chat box. Okay, so if you have any doubt, you can ask me in the chat box. Thanks. Don't talk, just simply raise your question in the chat box so that I can read from the chat box and I will answer you accordingly. Sure, sir. So shall we start or?
Here is a very pictorial view of the entire thing. I have told you that this is the liver. Liver is a human organ. Liver we extract the DNA. Then we prepare a library according to the DNA, like hundreds of millions of genomic DNA fragments on a surface. Then we go for the single genomic fragment. Then we make thousands of copies. That is called as amplification. Then we'll go to the genome sequencing into the sequencing machine. This is a Sanger sequencing machine. Then we go to computational analysis of the data. The entire story जो तुम्हारे को narrate कर ली, इस story का ଗୋଟେ pictorial view you can have in this entire PPT. Just observe all those things. If you have any kind of doubt, you can ask me. This diagram is present in your NCERT book, and it is a more detailed way of the diagram. So have a look, dear students, have a look and ask me the doubt. Which is happening. Do you have any doubt? Students, please respond. Do you have any doubt? From Mujit, good morning. Nasrin, good morning. No. Okay. This is the thing I'm expecting from you. If you have any doubt, then I'll solve your queries. Then I'll move forward. Otherwise, I can go from here. Now, coming to the next part, you can see here, he is Mr. Frederick Sanger, the great scientist Frederick Sanger, who is the man behind the Sanger sequencing mechanism. Who is talking now? Ami, what is the problem, man? Meghawani Bari. Just a second. Now, our problem हमारे sorry for the small technical error. Our problem हमारे जो मैंने भी mute किया समझ में finally mute करा है ला. So no more interaction, no more disturbances. We'll start from this part. So Sanger has also developed the method for sequencing of amino acids and protein. You know proteins. What are proteins? Proteins are the bunch of amino acids. Yes, so no, proteins are a bunch of amino acids which are joined together through the peptide bond to make a polypeptide chain.
This is Mr. Frederick Sanger, the scientist Frederick Sanger, and he has also developed a method for sequencing of amino acids in the proteins. DNA is converted to random fragments as there are technical limitations in the sequence. DNA पाखरे कौन थिला ना technical limitation थिला sequence मानकरे and sequencing very long pieces of DNA. And Human Genome Project was closely associated with bioinformatics. Here arrives a new technical branch that is called as bioinformatics. Dear students, you must have heard about biochemistry, biophysics. Now it is called bioinformatics. Biotechnology, it is bioinformatics, means biology plus computer science or information technology. Mistake ଗୋଟେ ନୂଆ branch ଟି ବନିଛି bioinformatics, where we are not only residing on the laboratory, rather we are also focusing on the computer part, data analysis part. Next, the Human Genome Project was closely associated with bioinformatics and application of computer science and information technology to the field of biology and medicine. That is bioinformatics for your reference. Here, so till now, we have known about the introduction of Human Genome Project. Then we know about the various goals of Human Genome Project. Then we quickly come to the procedure of Human Genome Project. Then we know the methodologies, केमती से कामटे होची, procedure कौन होची तारा, and next we will move ahead. जोठी हमें देखिबा कि on the chromosome आर कौन हमको finally जिनसे मिलिला. What are the salient features? जो माने बोर्ड एग्जाम ପାଇଁ प्रिपरेशन करिचो सेमाना ପାଇଁ कि ଗୋଟେ 2 मार्क क्वेश्चन आसीबो, write a short note on the salient features of Human Genome Project. Like we have started the process, like we have some aim of the experiment, then we have some requirements, then we have the theory, the methodology, then we have the procedure. Now it's time to analyze the data. Now it's time to have the observation, and then we'll go and conclude the entire experiment. Here, the 13-year project जो चलथिला, the 13-year project रा कौन findings हमर अछि कि हम starting कोड गले को पार्टी पाइले, then हम conclusion कौन करियो ताको. Let's start from this. One by one, Human Genome Project process of the 24 chromosome. Remember 24 chromosome? How it is 24? Because 22 are autosomes and then X chromosome and Y chromosome. The two are allosomes. These 22 are autosome and X and Y are allosome. The last sequenced one is chromosome 1. Yes or no? Man rakha, तुम कहिथिले starting do. The Human Genome Project was a mega project which was started in 1990 and officially it is ended in 2003, but unofficially it has ended in May 2006. 2006 ରେ ମାନେ 16 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରୋସେସ କୁ. କାହିଁକି? ରିଜନ କଣ ନା କ୍ରୋମୋଜୋମ 1 କୁ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କି ଟେକ୍ ଲାର୍ଜ अमाउंट ऑफ टाइम. yes or no? एठो मन रखिदे कोन जेतिको भी हम क्रोमोजोम अछि सबटो बड़ क्रोमोजोम के having more number of genes, that is called chromosome number 1, and chromosome number 1 has 2968 number of genes. Remember this number. 8 question asibo chromosome 1 रे केतेटा जीन अछि? The answer is 2968 number of genes. 2968 एतिटा जीन अछि chromosome number 1. It is the biggest chromosome, largest chromosome. जदि ये largest है कि वो smallest definitely थिबो, तो smallest की अछि तो chromosome 1 जदि largest अछि सबसे smallest होछि chromosome number y. Clear? The chromosome y तमे देखो जो it is the smallest. Chromosome 1 is the largest chromosome having more number of genes and सबसे smallest होछि chromosome number y जोटा सबसे smallest number of genes को रखिछि और smallest number of gene केते? The amount is 231. 231 मन रखिबो. Confusion कोड हेसिबो ना MCQ रो ऑप्शन रे. ऑप्शन कोन देथिबो? क्वेश्चन दे chromosome y contains dash number of genes. आंसर देथिबो 1 2 3 2 3 1 3 2 1 3 1 2 एमते ऑप्शन बोले ही देथिबो. And you have to be focused and the answer is 2 3 1. See, 11, there is no mechanism here. जगो मतलब बुझे परिबे. It's a factual question. Fact based question. आ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को आंसर दबा हेले हमको प्रैक्टिस करियो पड़िबो थरोली आ ई चैप्टर को बारंबार रीड करियो पड़िबो. देन तेबे जहां साइलेंट फीचर मु तम आगे रखिबी, यू नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग. क्लियर? आ मन केमत रहिबो से बात भी मु तम कहूची. जस्ट थोड़े पढि दियो, देन सेकंड टाइम ताको बुझो आ थर्ड टाइम रे मन रखो. फर्स्ट टाइम पढि कि फर्स्ट टाइम मन रखो नै, जमा मन रहिबो नै. फर्स्ट यू रीड द एंटायर सेंटेंस only for the sake of reading.
Second time you read the same sentence and then you start understanding it. एठी कौन कुहा जायछि एठी को जिंसटी लिखा है जार मीनिंग कोन एग्जैक्ट इज अ टर्म रो मीनिंग कोन and third time you go and read the same sentence and this time it is automatically तमरो subconscious mind रे फिट हे जायछि. See, genetic and physical maps in the genome are generated using information on the polymorphism of restriction endonuclease. Remember the name of the enzyme. Orange color lekha hai. The name of the enzyme is restriction endonuclease. Like hame RE boli koche by restriction enzyme boli koche. It is recognition site and some repetitive DNA sequences which are also called as microsatellite. देखो এই পার্টটা বহুত ইম্পর্টেন্ট ଅଛି আকু বুঝিলে ହିଁ ତମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ DNA fingerprinting ବୁଝିପାରିବ. Then I have already told you कि this chapter has very influence get very influence from the biotechnology part. जो बायोटेक चैप्टर अछि सेठु इन्फ्लुएंस नोची कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आसिला माइक्रो सैटेलाइट आसिला मिनी सैटेलाइट आसिला कौन ए सब टर्म अरे माने कौन ए टर्म माने देखो सैटेलाइट होची से रिपीटेटिव सीक्वेंस जो हमर डीएनए रे अछि. 99.9% of DNA are similar among all the human beings, whether he is from African Negro person or is an American citizen or a British man or an Indian or a Polish citizen, Indonesian citizen, जो भी हो. India, if you go to the Kashmir region, if you go to Tamil Nadu, if you go to Kanyakumari, if you go to Manipur, Meghalaya, Mizoram, Assam, जो भी देखो जितने भी human being तुमको दिखा जाओ every human being has 99.9% DNA similarities. Then the difference केमते अछि data individual अलग अलग केम देखा जाउछे. What is the difference? The difference is only in 0.1%. Those 0.1% difference जो अछि that are called as satellite DNA. Say satellite DNA from three प्रकार अछि. One is mini satellite and another is micro satellite. And you know the difference between mini and micro. Mini is small, micro is even smaller. Mini small, yes or no? Micro is even smaller, tiniest जो ता पार्ट का. तो ए जो माइक्रो सैटेलाइट माने अछंदी ताको हमें कोन करछे ना सीक्वेंस करी कि देखुछे कि कोन जगह रिपीटेशन हेछि. माइक्रो सैटेलाइट तुम एमती बुझिबो एमन शॉर्ट सीक्वेंस अछंदी केते केते ने मान कि 6 to 10 बेस पेयर अछंदी. 6 to 10 बेस पेयर आ आंकर रिपीटेशन बहुत अधिक हेतिबो. मिनी सैटेलाइट को हे गेला सी होछि कहि गेला से हमर 6 to 10 नै मो 10 रो बड़ अछि आ 100 जाय कि रहबे 100 to 1000 जाय कि से तीटा सीक्वेंस रिपीट हेतिबो आ सी हबे रिपीटेशन तारा कम हेतिबो. मान जार अमाउंट छोट जार साइज छोट तार रिपीटेशन अधिक जार साइज बड़ तार रिपीटेशन कम. एग्जांपल गोटी देबे आराम से बुझ जाय परिबो. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 10,000 रुपीस ये जो 10,000 रुपीस को जदि मु 500 रुपीस रे कन्वर्ट करबी तो केतेटा 500 रुपीस हेले नोट हेले मो 10,000 हबो ओनली 20 इसो नो 500 टंकिया 20 टा हे गेला तले 10,000 रुपीस कंप्लीट. बट इफ 500 रुपीस रो नोट न होई कि 10 रुपीस रो नोट हेची रणकर वैल्यू 500 तो रिपीटेशन कम ओनली 20 टा. बट जहार वैल्यू बे 10 अछि ताको अभी क्या 100 टाइम्स बट होवेगा 1000 टाइम मल्टीप्लाई करले जाएंगे से हबो 1000 into 10 is equal to 10,000. रेडी 20 टा नोट रे 10,000 टा हे गेला रेडी 1000 टा नोट रे जाएंगे 10,000 टा कंप्लीट होची. दिस इज द मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट फॉर यू. क्लियर नाउ. The DNA sequencing also have been done in bacteria. In yeast is the C. elegans of free living non-pathogenic nematode, Drosophila, plants like rice and Arabidopsis thaliana, etc. So A मानक भितर भी हमें DNA already sequencing करा जायछि. तो एठु करा हला परे we got an idea of how to do this DNA sequencing or how to do the human genome project in the 1990. तो से जाएंगे काम किछ करे नथला ता पूर्व के बेसिक आइडिया नि आइछि प्रोकैरियोट केमते होछि बैक्टीरिया पाखरे केमते होछि यीस्ट पाखरे केमते हेछि सी एलिगेंस से केमते हेछि एंड देन हम जदि प्लांट को आसीबा देन राइस रो जीनोम प्रोजेक्ट हेछि अराबिडोप्सिस थाइलियाना जीनोम प्रोजेक्ट हेछि दिस आर द पार्ट. क्लियर. ताऊ हम जेनेटिक मैपिंग भी करि पारछि जेनेटिक मैप करिया द्वारा हम आइडेंटिफाई करि पारछि व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकस को पॉइंटर म्यूटेशन हेछि को पॉइंटर काम कोन वी बेसिकली गॉट द एंटायर पार्ट. जेमति हमर गूगल मैप अछि सैटेलाइट किसी इमेज दोछि सैटेलाइट इमेज रो हमर लोकेशन पे मारी के पहुंची परछि त जगह रे ठीक सेमते जेनेटिक मैप रे हम कोन करि परछि ना जीन रे मैपिंग करि परछि कि व्हिच सेगमेंट रो इंपोर्टेंस कोन त काम कोन केमसे ता रोल प्ले करछि.
Now, these are the silent features of human genome, and you need to remember each and everything. Then, starting from the number 1, human genome contains 3164.7 million nucleotide bases. Remember, abe keteda bases achi human genome pakhare, the entire human genome 3.3 into 10 to the power 9 base ru keteda human genome re asibe na 3164.7 million nucleotide bases. You know what is nucleotide? Nucleoside plus phosphate is equal to nucleotide. इसे तब मन रखियो. Number 2, the total number of genes estimated थिला 20 to 25,000, but actually आसिला केते 30,000. Then हम estimated थिला 20 to 25,000, but actually केते 30,000 दा gene अछि. Then total number of genes हम body रे bases केते अछि nucleotide bases 3164.7 million bases. आहा भितर जीन केते 30,000 टा त माने जो जीन अछि व्हाट इज जीन जीन इज अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए सेगमेंट कहले गोटे पार्ट डीएनए रो आ से पार्ट काहा को नै तयारी छि एई एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन थाइमिन ग्वानिन एडेनिन साइटोसिन एई जो पार्ट को नै कि सेगमेंट को नै कि गोटे जीन टी बनि छि तो एई भलिया केतेटा जीन अछि 30,000 टा जीन अछि रिमेंबर हाउ मेनी जीन्स आर देयर इन ह्यूमन जीनोम आंसर इज 30,000 and what are the number of nucleotide bases present in the human genome. How many nucleotide bases are present? Answer is 3164.7 million nucleotide bases. Number 3, the average gene consists of 3,000 bases. If we have the number of nucleotide base and we also have the number of genes present in the DNA, then I'm average जरी calculate करूचे तो average हमर आसिला 3,000 टा bases for a single gene. गोटे जीन केतेटा बेस को नै तेरी छि 3,000 जीन को नै तेरी छि एवरेज बट ये जो एवरेज नंबर है एक्सेप्शन भी अछि आ से एक्सेप्शन कोन कहूची बट द साइज वेरी यस और नो साइज तो वेरी करिवो द लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन इज डिस्ट्रोफिन व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम एंड इट कंटेन्स 2.4 मिलियन बेसेस रिमेंबर ये जो हमर डिस्ट्रोफिन नामक जीन टी अछि हम मसल थादी से एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट अछि आ आर साइज केते 2.4 मिलियन बेसेस हमें कहले कि एवरेज हाइट होची एवरेज सीक्वेंस होची 3000 बेस 3000 डला एवरेज एटी होया करता मिनिमम टी एवरेज हम कैलकुलेट करके देखिबा बट साइज तो वेरी करबो कि सब अधिक थिबो कोड कम थिबो तो अधिक कि सब लार्जेस्ट कि अछि डिस्ट्रोफिन और डिस्ट्रोफिन पे केते अछि 2.4 मिलियन बेसेस क्लियर यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग now the fourth point 99.9% nucleotide bases are same in all people all people तमे जते भी human variety देखो छ हम समझते homo sapiens sapiens in each and every homo sapiens sapiens the DNA is 99.9% similar yes or no तो जीव हितो से गोटे राजाटे हितो से गोटे प्रधानमंत्री होई थांतो से गोटे क्लास टीचर होइथांतु से साइंटिस्ट होइथांतु गोटे लेबर होइथांतु गोटे ऑटो वाला होइथांतु से जे भी होइतो if he or she is a human being then there are 99.9% DNA similar in both the cases among all the people our difference केते आछी ना only 0.1% पिला माने 0.1% sounds very small but 0.1% कहार सेटा मैटर करछि ठीक अछि 0.1% sounds very small कि बस इतनी डिफरेंस अछि you and me those who are watching this classes sitting in a respective higher secondary school so those who are watching this classes sitting in a respective home the semane among with the difference kete only 0.1% but the 0.1% kete exactly na 0.1 multiplied with 3 into 10 to the power 6 number of base pairs एटिका आउल डिटेल्स रे कहिबे 6.6 into 10 to the power 6 number of base pair रो 0.1% हम देखिबा तो ये अमाउंट आसिलारो बहुत अधिक आसीबो एतिकी 3 into 10 to the 6 base pair ता हमर आसिलाडी डिफरेंस बुझ परछो 3.3 into 10 to the 6 30 लक्ष्य बेसिकली डिफरेंस हम भितरे अछि then every individual unique so functions of over 50% discovered genes are unknown मन रखो जेतिकी जीन हमें काढी छे केते जीन काढिले 30,000 जीन्स आर देयर ये 30,000 जीन्स रो 50% माने ऑलमोस्ट 1,500 जो 15,000 जीन रो फंक्शन हमको जाना नहीं अननोन जेम तम केमिस्ट्री पीरियडिक टेबल अछि से पीरियडिक टेबल ले किछि गैप सब अछि जो गैप को तमन फिल करियो पड़िबो व्हेनेवर तमे जेबे जाय कि साइंटिस्ट हो इन फ्यूचर तमे से जिंस जे कि किछि डिस्कवर करू छ किछि मेटल डिस्कवर करू छ
एटा तुमने प्लेस करबा पई तमे स्पेस रखाई पीरियोडिक टेबल ले ठीक सेमते 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन नो रोल भी जणा नहीं और आ पर साइंटिस्ट माने काम करछंती टू गेट द आईडिया क्लियर chromosome 1 has the most number of genes which is 2968 and chromosome Y has the fewest number of genes that is 231 I have already told you a number मन रखो data मन रखियो next less than 2% of genome codes for protein आज हम genome को देखिबा और less than 2% is actually coding for protein बाकी माने काम ही करनांती 50% काम हमको जाना नहीं ଆଉ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବି only 2% actually କାମ କରୁଛନ୍ତି you need to remember all those silent features 2 mark question ଆସିବ silent features of human being last data point ଆସିଲା very large portion of human genome is made up of repetitive sequences and these are stretches of DNA sequences that are repeated many times and they have no direct coding functions they shed light on chromosome structure dynamics and evolution important part टी भलसे बुझाइटी हम पाखे एमिति किछि रिपीटेटिव सीक्वेंस माने अछंती जो रिपीटेटिव सीक्वेंस करा डायरेक्टली किछि रोल नाही हमर बॉडी रो स्ट्रक्चर रे हमर फंक्शनिंग रे डायरेक्टली किछि रोल नाही बट एई माने ही जो नॉन कोडिंग सेगमेंट अछंती दे पुट अ वेरी important role, vital role in the human dynamics, in the chromosome structure, and also in the evolution. मतलब evolution केमिति हेची आमे माकडर मनुष्य केमिति बनिले म्यूटेशन हेची धीरे धीरे इवॉल्व हेची किछि वेरिएशन आसीची they are having a langudo tail आम से langudo नहीं tail नहीं but still we have that coccyx bone yes or no तो ए जो इवोल्यूशन टी हेची ए जो म्यूटेशन हेची जो वेरिएशन आसीची केमिति आसी नॉन कोडिंग जीन मान करे किछि रिपीटेटिव सीक्वेंस किछि चेंजेस आसीची से छोटे छोटे चेंजेस टी पासन हे के आसीची इनहेरिट हे के आसीची एंड फाइनली हम इवोल्यूशन नो गोटे पार्ट टी हे पंचे then so it has a very direct role kichu nahi but they shed light on the chromosome structure the dynamics and also on the evolution and the last part about 1.4 million locations have single base DNA difference then just remember this term about 1.4 million location empty achi 3164.7 million total thila basis re ता भितरु 1.4 million basis रे कोन अछि ना single base DNA differences जाको हम कोन कहूचे SNP and SNP stands for single nucleotide polymorphism जाको हम SNPs बोली पड़ছে SNP stands for single nucleotide polymorphism what is polymorphism poly means many and morphism means structure तो कोन हेची ना गोटे सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हेची सपोज गोटे सेगमेंट दिला ATGC 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 कंटीन्यूअसली रिपीट हे चलची हठात ATGC पर ATTA हे गला ATGC थिला ATGA हे गला सी जगह रे ए पड़े लागे तो सेट जो चेंज हेची दैट इज कॉल्ड अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म और सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म का तमरा कोडिंग सीक्वेंस रे आसीला तको हम एलील बोली कहिबा যদি নন কোডিং সিকোয়েন্স আসিছি দেন সেই কেসে সি আগো যাইকি ইভোল্यूशन করিবো আগো যাইকি মিউটেশন করিবো আগো যাইকি ভেরিয়েশন আনিবো আর সেই ভেরিয়েশন লিডস টু ইভোল্यूशन this is the part you need to remember and this helps to find chromosomal locations for disease associated sequences and tracing human history ଆମେ जो कोचे फाइलोजेनेटिक स्टडी करछे फाइलोजेनेटिक स्टडी मींस आमे हम एंसेस्टर मानक सहित हम रिलेशनशिप देखुछे हाउ यू आर लिंक्ड टू आवर एंसेस्टर तांकर थिंकिंग कैपेसिटी केमते थिला तांकर डिसीजन मेकिंग पावर केमते थिला तांकर इनोवेशन केमते थिला तांको सहित हम जने निजो कंपेयर करूछे हम ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस करिया पाई कि ट्रैक करिया पाई कि वी नीड टू नो अबाउट दिस डेटाबेसेस वी नीड टू नो अबाउट द सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म ए जगह रे केमते चेंजेस थे जी जगह रे ए लागि वाला बाकी सब सिमिलर थिबो केवल गोटे जगह रे परसेंट चेंजेस so now it's time to quickly summarize the entire part this slide is very important those whoever have joined later और जो मैंने ज्वाइन करछ समान पई कि फुल चांस मिली थी एंटायर पार्ट को समराइज करिया पई कि मेमोराइज करिया पई कि जस्ट हैव अ लुक डन The Human Genome Project. It is the first mega project for sequencing of nucleotides and mapping all the genes in human genome. Yes or no? Human जो genes माने अछंती, the set of all gene is called a genome. अब से genome को हमें कौन करते sequence करते, से nucleotide माने को position को देखुचे, और mapping करते, जानो उसे को जगह रे किया ची. That is called as Human Genome Project. It is a mega project. कौन कौन गोल थिला तंगर ना गोल थिला identify all the genes in DNA
डीएनए भीतर जो जीन्स मान अच्छे समस्त को आइडेंटिफाई करवा चिन्हट करवा नंबर 2 सीक्वेंसिंग ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर्स ऑफ ह्यूमन डीएनए जो 3 बिलियन बेस पेयर हम भीतर अछि 3.3 into 10 to the power 9 number of base pair in a haploid content of DNA ताको हमें सीक्वेंसिंग करवा जानिबा ता पोजीशन जानिबा थर्ड स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेसेस ये जो इंफॉर्मेशन हम सीक्वेंस करले जाको हम जानिले ताको डेटाबेस रे स्टोर करबा फॉर फर्दर रेफरेंस फोर्थ improve tools improve machineries improve ideas for data analysis केमते हे परिबो ताको भी हमें सिखिबा then transfer related technologies to other sector ए जो हमर इंफॉर्मेशन पाइला को हम पाखे लिमिटेड रखिबा नै त डिफरेंट सेक्टर बायोटेक सेक्टर बायोफार्मा सेक्टर then सेट अबिका एनवायरमेंटल सेक्टर कि डिफरेंट सेक्टर इनोवेशन सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये सब जगह को हमको तो ट्रांसफर करिया पड़िबो ताको नै कि जिंस फॉर्मेशन करिया पड़िबो and also you need to address the ethical legal social issues ELSI ethical legal social issues को address भी करिबा then एटा हला प्रोजेक्ट ये हला हमर गोल हमर ऑब्जेक्टिव देन आसा हम जानिबा मेथोडोलॉजी केमिति कामटी करिबा केमिति करछे डीटा मेथड अछि वन इज EST सेकंड इज SA SA means साउथ अफ्रीका नुहे SA means sequence annotation and EST माने कोन हे गेला expressed sequence tag माने कोन ना focused on the identifying all the genes that are expressed as RNAs हम बेसिकली कर से कोन पिला माने छोटी एग्जांपल देबे आराम से बुझ पारे जिंसटी एग्जांपल होची कोन सपोज तुम प्रैक्टिकल रिकॉर्ड रे यू नीड टू पेस्ट अ फोटो सपोज तुम प्रैक्टिकल होची ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और फोटोडी तुमको लगेबार अछि देन से फोटो कोड प्रेजेंट अछि ना फोटोटा प्रेजेंट अछि तमरो बुक रे अछि अच्छा बुक रे से फोटो काटी के लगै हेबनी लगै हबा कि यार बही को चिरबार कि बही चिरबा नै तमे कले कोन ना बही रो जो पेज से फोटोटी अछि से एंटायर पेज को हमें कोन कले जेरॉक्स कर देले देन जेरॉक्स कर सला परे जति पोर्शन में फोटोटी अछि ताकू ही हमें जेरॉक्स पार्ट रो कट करी कि ताकू ने चिपकै देले एंती ही परिबो यस और नो कोन कहली बुझ पाइलो कि वी हैव अ पिक्चर वी नीड अ पिक्चर दैट पिक्चर इज प्रेजेंट इन द बुक बुक द पिक्चर काटी के आनी परिबा नै हमें कोन कले स्टेटमेंट कोन करछि ना से बुक को हम जेरॉक्स कर देले से जो पेज से फोटोटी अछि सिलेक्ट से 15 नंबर पेज रे से फोटोटी हमहु देछि तो 15 नंबर पेज रो कलर जेरॉक्स बा कलर प्रिंट आउट हमें काटी देले काटी सल्ला परे सेतिर हम जति पर्सन दरकार अछि सेति पर्सन को हमें कट करले और कट कर ताको आने के हमर रेस्पेक्टिव प्रैक्टिकल कॉपीज रे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड रे पेस्ट कर देले क्लियर दिस इज कॉल्ड अ सीक्वेंस एनोटेशन जो पार्ट दरकार थिला केवल सेति पार्ट को काढिले बट एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग कोन कहूची से कहूची EST माने कोन कहूची ना आमो से फोटो दरकार ना आम पाखे अछि ओटे व्हाइट पेपर टे देन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड व्हाइट पेपर टे अछि एठी आमो नै से पिक्चर लगाव पड़िबो बट से पिक्चर से लेखा पार्ट भी रहूची तो फर्स्ट जेरॉक्स कला पूर्वरु आमो सब जगह से पिक्चर वाला पार्ट को छाडी देकी बाकी पार्ट रे व्हाइट पेपर चिपकै देबार अछि फॉर एग्जांपल आम पाखे गोटे पेपर टी अछि पेपर कॉर्नर रे लेफ्ट साइड रो लोअर कॉर्नर रे पिक्चर टी देछि बाकी रेस जगह लेखा है सब जिंस एंड आमो से लेखा पार्ट दरकार नै तमे से लेखा पार्ट रे पेपर लगे देले व्हाइट पेपर नै के सेटे हम चिपकै देले सो दैट कोन हला एंटायर पेपर टा हे गला व्हाइट कलर रो तळे केवल हम छुटिया कोन अछि ना पिक्चर टी अछि एबे जब हमको जेरॉक्स करिबा जेरॉक्स कलर सिंपल पेपर टी बाहरिबो जदर एवरी पार्ट इज व्हाइट एंड केवल हेड पिक्चर अछि तो एठी हम काटियो पड़िबो नै जहा अछि आराम नै तो चिपकै दे परिबे जेम डेटा मेथड होची सेमती गोटेला एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग ने कोन होची जो डीएनए हम पेखर अछि से डीएनए को हम एक्सप्रेस कले और डीएनए एक्सप्रेस ले कोन बनेबो आरएनए बनेबो बट यू कैन टेक सेल रेट डायरेक्टली एमआरएनए फॉर्मेशन होएनी डीएनए बनेबो एचएन आरएनए हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए एंड से एचएन आरएनए को हम स्प्लाइसिंग करथिले और स्प्लाइसिंग करी के रिडंडेंट पार्ट को इंट्रॉन माने को हटेइ दोथिले आ जो एक्सोन माने थिले सी हे गला मोर आरएनए आ आरएनए को फोन मो रिवर्स करी कि सी डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर्मेशन कर देली so that from a large DNA I am getting a small coding sequence और सेठी मु तो एक्सप्रेस करी कि टैग लगे देली ए जीन काम कोन ए जीन काम कोन सी जीन काम कोन that is called as express sequence tag method but in case of sequence annotation it's a blind approach माने जहां अछि त जेरॉक्स मारो देन तापर कोन करा हबो हम जो पार्ट से दरकार ताको रखिबा जो दरकार नै ताको अबे हटेइबा फॉर एग्जांपल हमें कोन करले एठी एसएम सीक्वेंस सीक्वेंसिंग होल जीनोम हमें एंटायर जीनोम को सीक्वेंस कर देले देन तारो रिपीटेशन को देखि कि एनोटेशन हमें करिछि तापर
what are the procedure of sequencing केमिति हम procedure sequencing केमिति करछे important part टी one by one line by line मन देखो number 1 isolate DNA from a cell को भी हमें काम करछे first of all you need the DNA हमें DNA को isolate करिवा then convert into random fragment से DNA को हम random fragment रे convert करे अछि काटिबार अछि छोट छोट part रे divide करिबार अछि then clone in a host using vector क्लोन करिबा तर कॉपी बनेइबा एम्प्लीफिकेशन करिबा मल्टीप्लाई करिबा कोठी ना गोटे यूजिंग अ होस्ट आ होस्ट भीतर केमिति एंट्री करिबा गोटे वेक्टर द्वारा एंट्री करिबा बिना वेक्टर रे हम पहुंचै परिबा नहीं मन रखै जिंसटी फॉर एग्जांपल इन सम फाइन डे आई एम गोइंग एंड विजिटिंग टू योर होम मो तम घर को जाउची तम घर केवल मते की चिन्हनांती तो तम घर मते एंट्री करिवे कि गेट बाहर मना कर दे आपण आसंतु बोली बट जदि मु तम इनविटेशन ने जाउची तमे इनवाइट करछ मते तमे प्रेजेंट अछ आ मु जाउची से जगह रे तमे होस्ट रे मते तमको एंट्रेन करिवे मते घर को डाकिबा जे टीचर घर को डाकिबा चा पानी पचरिबे दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर मेथड वेक्टर कोन करछि ताको कैरी करिक नै जाउची जण सहित गले ही ता सेठी चर्चा मिलिबो सिंगल जो डीएनए इंडिविजुअल डीएनए पढौची ताको से होस्ट सेल बाडे की मार दबो किए ये क्वाड है जो फॉरेन पार्टिकल एनी काइंड ऑफ फॉरेन पार्टिकल एंटरिंग टू माय बॉडी इज कॉल्ड एज एंटीजन और से एंटीजन को मारिया पाई कि मो बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म एंटीबॉडी रेडी कर रखी छी जदि तमे बॉर्डर क्रॉस करी का सोच हैविंग अ प्रॉपर वीजा हैविंग अ प्रॉपर पासपोर्ट तुमको एंट्री मिलिबो तमे को पर्पस ला सब लिखाई से वीजा दे रे तमे एंट्री कर पाए ससन माने आसीबो फ्लाइट रो बोर्ड कल स्टेशन तमे तमे होटल गला जोट रहिला जब तुम लुचि की धमकी मारी क्या होछ लुचि क्या होछ बॉर्डर क्रॉस करी क्या होछ चोरंग बडा टेररिस्ट बडा आसुछ इंडियन आर्मी देखिले सेट गोली करी मार दब तो ठीक है बडा जिंस डीएनए इंडिविजुअल जाई परिबो नहीं डीएनए को नबा पई कि वी नीड अ वेक्टर और से वेक्टर टी के ही परिबो ना बीएससी और वाईएससी BSC stands for bacterial artificial chromosome. YAC stands for yeast artificial chromosome. Next, sequencing of fragments using automated DNA sequencer. आमे एठी कहार DNA sequencer यूज करछे ना डॉक्टर फ्रेडरिक सैंगर साइंटिस्ट फ्रेडरिक सैंगर आंथरोड मेथड थिला सैंगर sequencing method ताको हमें यूज करके automated sequencing माने you put the data in the computer and the computer will automatically sequencing की कहा पर रहइबो केमते रहइबो से सब जिंस हम करिके दे दबो then jinso asigala we need to arrange the sequences based on the overlapping region किए कहा को overlap करछि किए को जगह चढ़ी की रहिछि से overlapping region को हम देखिबा अछि again ए काम बे हम करिबा नै आकु बे कंप्यूटर ही करिवो next alignment of sequences using computer program again alignment जो करा जाउछि सी भी कंप्यूटर करिया माने बेसिकली एठी अल्प किछि पार्ट अछि जो फर्स्ट जो प्रोसेसर कहली से सब जिंस होछि हमर वेट लैब रो काम wet lab माने कोन inside a laboratory the scientists or researchers are doing that this part he isolating a DNA then cutting the DNA by using a station fragment then तापर से DNA को sequencing करा होची clone करा होची एसो पार्ट हेला wet lab part रो dry lab रे के आसीबो जोडी कंप्यूटर वाला जिंस आसीला we have the DNA we have the fragment we need the sequence आमे से साइंगर sequencer से DNA को रखिले से fragment को रखिले and एपटे हमर रिजल्ट पड़े आसीला देन तो किछि पार्ट हम मैनुअली करूछे लैबोरेटरी रे किछि पार्ट हम ऑटोमेटिकली करूछे कंप्यूटर रे यूज करके नाउ what are the salient features of human genome now it contains 3164.7 million bases and 30,000 genes 99.9% nucleotide bases are same in all the people chromosome 1 has the most gene that is 2968 number and chromosome Y has the fewest that is 231 सबुटु बडा chromosome 1 सबुटु छोटो chromosome Y major portion of genome is made up of repeated sequences that hame kon कहले SNP single nucleotide polymorphism then asila it on 1.4 million location have single base DNA sequences that are called as SNP single polymorphism and ei सब जिंस सरला परे हमें किसी जीवा प्रीवियस क्वेश्चन को इला माने हमें जिंसटी कोन टाइम पढुतले because आगु हमगु जाईकी नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन दबाव पड़िबो just for your kind information these are the previous year questions from this topic human genome project रो 2023 रे जेटा क्वेश्चन आस्थिला 2022 रे गोटे क्वेश्चन आस्थिला 2020 रे गोटे क्वेश्चन आस्थिला 2017 रे गोटे क्वेश्चन आस्थिला for time being ये क्वेश्चन रो प्रिंटशॉट्स जो स्क्रीनशॉट नै जा and after a quick some commercial break और छोटिया ब्रेक पर हम फोन ए पार्ट को फेरिबा क्वेश्चन आंसर दे कर then we'll take a short break 9:05 हे गेला नेठी और 5-10 मिनट ब्रेक नबा क्वेश्चन हम आखि के रखाई छी क्वेश्चन नै के ना आंसर करी के जीवा whatever will say जहाँ तुम माने कहबो क्वेश्चन आंसर एबे करिबा ना ओटा ब्रेक नै करिबा जहाँ तुम माने इच्छा तुम कहबो से अकॉर्डिंगली हम करिबा I am requesting all the participants
If they want to stay here and question answer solve କରିକି next part को ଯିବା, that is okay fine. ଆଉ ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛ କି ନାଇଁ ଟିକେ break ନେଇ question answer କରିବା, that is also fine. Choice is yours. Answer କରିକି ଯିବା, okay. ठीक ଅଛି, ଗୋଟେ ପିଲା କହିଛି answer କରିକି ଯିବା, ଚାଲ answer କରିବା. The last chromosome sequence in human genome project was dash. ସବୁଠୁ last ରେ କୋଉ human genome ଟା sequence ହେଇଥିଲା? Chromosome 1 ରୁ ନେଇକି chromosome Y ଯାଇକି ସବୁଠୁ last ରେ କୋଉ chromosome ଟା sequence ହେଇଥିଲା? And the answer is, କିଏ କହିବ answer? The answer is Rasmita, Shruti, Patuli, the answer. ମନେ ପଡୁନି 2003 ରେ ଆମ ପ୍ରୋସେସ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ଅନଅଫିସିଆଲି ମେ 2006 ଯାଏଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ. ସେ ମେ 2006 ରେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ ଟି କିଏ କରିଥିଲେ? କୋଉ ପାର୍ଟ ଟା ଲାଷ୍ଟ କୁ ହେଇଥିଲା? ଓକେ, ଯଦି କେହି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆନ୍ସର କହିଦେଇ ଯାଉଛି. ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ କ୍ରୋମୋଜୋମ ନମ୍ବର 1. Clear? Chromosome number 1 ଟି ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ହେଇଥିଲା. Now, express sequence tag EST କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? What do you mean by EST? EST refers to a certain important expressed genes, all genes that expressed as RNA, all genes that are expressed as proteins, all genes whether expressed or unexpressed. କିଏ ଆସିବ ଏଠି? Answer this quickly. କେତେ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଛି NEET ରେ, ଯଦି ତମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବ କ୍ଲାସ ରେ ତମେ ଆରାମ ସେ ଆନ୍ସର କରିପାରିବ ଜିନିଷର. Krishna, Meghavini, Pankaj, କଣ ହବ ଏ question answer? Who is going to answer this question? Rajlakshmi, Pragya, Sangeeta, Sonali, Shruti, Subhalakshmi, Subhasri. Shruti is saying answer A. Na Shruti, answer A habani. Answer yes, Subhalakshmi has the right answer. Answer B is the correct. Yela all genes that are expressed as RNAs. हमको RNA बोलने express sequence tag दे. ठीक है EST. EST कहाँ को हमें कहते? ये certain important express gene नहीं, certain किसी टा नुअंती. All genes that are expressed as RNA. Once RNA formation है येला RNA रो ही हमें आगे जाएंगे gene बनेगा express sequence tag. If a geneticist uses blind approach for sequencing the whole genome of an organism, followed by assignment of function to different segment, the methodology adopted by him is called as dash. जोटी आसिला ब्लाइंड अप्रोच कथा पड़िला तो ब्लाइंड अप्रोच रे गोटे जिंस आसीबो पुणी होल जीनोम भी लिखि देछि. ब्लाइंड अप्रोच कहिछि पुणी होल जीनोम लिखिछि तो आंसर एटी हे गला सीक्वेंस एनोटेशन. ऑल आंसर सीक्वेंस एनोटेशन. नंबर 4. Yes, Sangeeta, right answer thila. Number 4, which is the basis of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting. ये DNA fingerprinting हो जोड़ा भी next class रे पढ़ेबे just 5 मिनट परे और human genome रे हो ये जो genetic mapping टी करा जाउछि ये genetic mapping रो basis कोन? इला polymorphism in RNA sequence, single nucleotide polymorphism, polymorphism in HNRNA sequence, polymorphism DNA sequence. को जगह रे polymorphism होछि? DNA रे होछि ना RNA रे होछि ना single nucleotide polymorphism को विशेष रे हम देखुछु. Yes, कोई क्वेश्चन आंसर है 4 नंबर क्वेश्चन ना समझ बुझन डी पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस. यस पॉलीमॉर्फिज्म जो डीएनए रे हेछि सेही बेसिस रे हम एठी काम करछ. राइट आंसर. Which of the following is a vector used in human genome project? Human genome project रे वेक्टर कहा को नहीं छे? क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन आंसर human genome project रे लास्ट. यस नंबर 4 और डी थिला. नंबर 5 जो अछि तार खाली ए हबनी. रश्मिता भलसे देखो केयरफुली. ए रहेला बीएससी, बी रहेला वाईएससी, हेले सी रे बोथ ए एंड बी अछि तो जोटी बोथ अछि त आंसर हे गेला ऑप्शन नंबर सी both BSC and YSC, bacterial artificial chromosome and yeast artificial chromosome. Yes, yes, Pragya, right answer. Subhalakshmi also giving the right answer. Done.
now. Okay, so Shiksha Jyoti portal, you already know about this segment, and thank you for your kind attention, and we'll meet after a short break. Just 5 minute break. 9:10 ହେଇଛି 5 minute break ନେଇଯାଅ, ଟିକେ ପାଣି ପିଇ ଦିଅ, ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ତାପରେ start କରିବା new part 2. So thank you for your kind attention, and we'll meet after a short break. ଛୋଟିଆ break ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ